Welcome everyone. Welcome everyone. Welcome to Physics Wallah. OPSC Wallah में समस्त को स्वागत. Okay. So जमती normally हमें start करंती. सेमती आज भी will come up with the new topics of geomorphology. और एटा जो YT session चा चलची. एटा हला exclusively and pre batch जो थे गुटे overall guidance दिया होची. Overall guidance for your upcoming prelims exam. Upcoming prelims exam बद्धे लागुची tentatively तमरा अक्टोबर फर्स्ट वीक हेबार बहुत संभावना अच्छी. तो देखिबा आगु केमती रहुची आउ ता पूर्वरु किंतु एमती नाही जेमती ओडिया रे गोटे कहावत अछि बेळ धाउथो बंध बंध. डेफिनेटली विल गो फॉर दैट वन. ठीक अछि. एंड दिस इज ए फ्री गाइडेंस. किंतु डिटेल रे जो पढिया पे हमर जोडी ओपीएससी रो बहुत सारा ओपीएससी वाला तरफ रु फिजिक्स वाला तरफ बहुत सारा कोर्सेस प्रोवाइड कराउ. जेमती ओसीएस पई जदी म कहबी OCS में specially we are giving this Saksham batch 2.0 जोड़ा कि basically this is a foundation batch, right? It's basically a foundation batch. और जब देखिए कि Aakrosh batch गोटे अच्छी that is for exclusively for the prelims, right? Exclusively for the prelims crash course, है ना? And तापर next unity integrated batch where it is combined with your prelims come mains specifically, right? Apart from that, ASO पाई इटा specifically ASO पाई Anubhag batch टा चलची जोड़ा कि only 799 रे. और अध्ययन जोड़ा कि OSSC और CGL पाई that is also 699. Aakrosh also 999 रे. So Sarv Saksham batch जदी तमे देखिबो 3499 और Aakrosh 999 and this is unit integrated 1999. So इत्ते सारा जिनसो प्रोवाइड करा हो गुटी प्लेटफॉर्म ने that to be very very affordable price. Definitely it will help you out those who are having dreams to be a government servant, right? So आगु बढ़िबा और एटा जो चलची हमर यूपीएससी प्रतिज्ञा दिवस पे ई जिंस दिस इज ए कमिटमेंट that to help the physics wala taraf to help the youths those who are really committed for the your competitive exams and they have a dream for the exams, dream to be a government officer, right? सो आगु बढ़िया पुणी विषय डिस्कस करबा. आज जेमति देखिबा कि आज रे बहुत बढ़िया टॉपिक दैट इज योर गुड इवनिंग प्रतीक्षा. हाउ आर यू? सो देखिबा कि दैट इज योर वेदरिंग एंड एरोजन, राइट? जोटा अब तमरो वेदरिंग एंड एरोजन. वेदरिंग एंड एरोजन गोटे नुवा टॉपिक एथरे हमें जानिबा जेमति जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज होपफुली ए ईयर हमें सार दबा. ठीक अछि. वेदरिंग एरोजन भितरु जदि हमें देखिबा कौन व्हाट डू यू मीन बाय द वेदरिंग प्रथम हमें देखियो ता पूर्व वेदरिंग माने कौन के मते कहि पर वेदरिंग माने कौन व्हाट वी कैन यस प्रतीक्षा वी कैन से व्हाट डू यू मीन बाय द वेदरिंग. वेदरिंग माने कौन? वेदरिंग वेरी गुड प्रतीक्षा. वेदरिंग माने हमें कौन बुझिबा कौन बुझुछ प्रतीक्षा जहा जानि छ को नॉर्मली हैला. देखो एई जिंस पई म तुमको आगुर भी थरे कहितली कि ई सब जिंस पढिया पई हमको दरकार एनसीईआरटी हैला. दैट इज वी नीड एन एनसीईआरटी हैला. एनसीईआरटी हम दरकार. ठीक अछि. पढिया पे हमर एनसीईआरटी दरकार. एनसीईआरटी पढले जिंस हबो बट जदी तमे क्लास रे सुनी दोछो आउरी तुमको तुमको ए जो फ्री YouTube रे जो जिंस हमर प्रोवाइड करा हो फिजिक्स वाला तरफ दिस इज ऑल टू गिव एन ओवरऑल गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू rather so that we can have an confidence about at least you can know कि हमको केमते अप्रोच नेबार अछि, how we are going to take the approach in your NCERTs, right? अच्छा वेदरिंग माने कौन के मते कहि पर व्हाट डू यू मीन बाय द वेदरिंग. वेदरिंग हैला माने हैला द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स सरफेस हैला. डिसइंटीग्रेशन हैला. डिसइंटीग्रेशन माने भांगी जीवा. डिसइंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेट कर जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक सरफेस और हैला माउंटेन रॉक सरफेस नॉर्मल. आज किछि जहां भी किछि होय छै तमे देखु छ इट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ द वेदरिंग प्रोसेस. लेट अस नो एटी देखो वेदरिंग जदि हम देखिबा कि वेदरिंग विषय रे. गुड इवनिंग श्रद्धा. गुड इवनिंग. हाउ आर यू? ओके. वेदरिंग विषय जदि देखिबा वेदरिंग causes the disintegration of the rock हैला. इट इज फॉर द disintegration of the rock near the surface of the earth हैला. अर्थ रे सरफेस पाखरे जोटा थाए दैट इज योर disintegration of the rocks near the earth surface
weathering breaks down and loosens the surface. Weathering कौन करे? Break down करे and loosens the surface, right? Break down and loosens the surface minerals, है ना? Break down करे and loosens the surface minerals of rock, so they can be transported away by the agents of erosion की such as your water, wind and ice, है ना? Yes, प्रतिक्रिया लिखले सर एटा हला breaking down of rocks. Yes, very good श्रद्धा, है breaking down of rocks जोटा हमें देखिबा, ठीक अछि? Breaking down of rocks. Good second, just hold on. Good second. अच्छा कोई चलो सेमती वेदरिंग जदी हैला. गुड इवनिंग प्रियदर्शनी, केमती अछो? Just a second. So आमे देखि परिबा एठी. I am good प्रियदर्शनी, I am good. लिटिल सर गोटे बुक कोहंतु जोटा पढिले पेपर क्लियर हो. अच्छा मु सब वन बाय वन कहूची हैला. पढ़िया पूर्व जस्ट मु गोटे जिंस कहूची को बुक्स पढ़िले हमर हे परिबो हैला. बुक्स पई जदी मु कहबी कि लिटिल पचाउची सर को बुक्स पढ़ले हमर बेटर रहइबो. सर मु एबे लिटिल को मु एबे लुसेन पढुची. एते बुक किनिबा पई पैसा पैसा सुनो वर्तमान मु कहबी देखो मु बुझी पड़चे एई समय रे फाइनेंशियल बहुत सारा प्रॉब्लम थाए, बट सेई जो मु कहूची पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला तरफ रो जो स्टेप निया होची. देखो आमे तो एठी प्रोवाइड करूछु तुमको पीडीएफ प्रोवाइड करा होची ऑनलाइन रे. पीडीएफ्स आर प्रोवाइडिंग थ्रू द ऑनलाइन हला. ऑनलाइन रे तमरो पीडीएफ्स जो प्रोवाइड करो दैट इज आल्सो वेरी अफोर्डेबल. आ इथरे तमरो किछि नै, तमे इथरे कोन पढ़ा को क्लास को लेक्चर भी सुनलो, पढ़ा भी बुझिलो आ हेल्प भी हैला. बुक्स पढ़िया पे लिटिल मु केवल तुमको कहबी कि एनसीईआरटी पढ़ो. लुसेंट तमे रेफर करि परिबो एसो पई, बट वर्तमान लिटिल एटा मु कहबी कि जो बडे लास्ट ईयर जो बडा क्वेश्चन आसी थिला हैला, माने मु जदी सिविल सर्विस कथा कहबी हैला, जदी तमे ओएस दोचो हैला, ओसीएस एग्जाम तमे दोचो, ओडिसा सिविल सर्विस एग्जाम दोचो. सिविल सर्विस पई तमरो क्लास करिवाटा बहुत जरूरी, काहे कि ना सिविल सर्विस रे एनसीईआरटी परे आहुरी भी बहुत जिंस जानि था जोटा कि क्लास रे फॉलो अप हुए. बुक्स को तमे रेफर करियो. बुक्स तो बाहर 50 टा बही माने माने अलमीरा भर्ती हे जो 50-100 टा हैला. क्लास नियो, क्लास कला परे तुम गोटे गोटे रोड मैप मिलिबो, सेही रास्ता रे तमे चलिबो. ठीक अछि? ओके. Yes, yes, there is no specific book actually. से कहीं ना सिविल सर्विस एग्जाम गोटे बहुत बड़ो एग्जाम, गोटे वेरी हाईली डायनामिक एग्जाम, बहुत जिंस तुमको जानिया पड़िबो. ठीक अछि? से जो आई वुड सजेस्ट कोन से जगह रे जदी तमे माने गोटे तमे गोटे पाउचो, गोटे तमे गोटे दिग्दर्शन पाउचो और गोटे गाइडेंस पाउचो, एंड दैट गाइडेंस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू रीच एटलीस्ट तुम गोटे आईडिया आसीयो हैला. ठीक अछि लिटिल? ओके. Sir, now I am in the 12th class. After my 12th completion, then I will be Rohit Kochach. I will be there. Definitely, definitely, bilkul Rohit. So I am so happy for Rohit that the 12th class re padhuchi Rohit, and he has got the vision to be a civil servant. That's really awesome. बहुत बढ़िया जिंस हैला. Really, it is magical. I am really so happy for them. Definitely, will as a mentor, I am always available for all my all my citizens. I mean, all the youths. It's basically those who are have and have a vision to serve the nations. Definitely I'll be available. Asto sir सब बड़े अच्छे हैं ना. अच्छा sir, there are so many books for the clear one exam. Definitely प्रियदर्शनी. Okay, से जो क्लास कले कौन होबो गोटे टीचर मेंटर संगे तुम गोटे ओवरऑल गोटे गाइडेंस पाइबो. और गोटे जो कहते से जो गाइडेंस काहे कि देखो जे गोटे क्लास 1 एग्जाम, और दिस इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द toughest exam not in the country, also in the world.
सो ये भाया जगह तुम गोटे गोटे वेटा मिलिया बहुत जरूरी ट्रिक्स काम करे ठीक अच्छे ओके सर एसो पई मु प्रिपेयर होनी ओएससीएस अच्छी मु जून 29 पर पढ़ी बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली लिटिल मोस्ट वेलकम बिल्कुल है एसो भी दियो एसो भी भलो एग्जाम्स दैट इज आल्सो ग्रुप भी गोटे जॉब सिक्योरिटी भी रहइबो सिक्योरिटी रहइबो एंड आल्सो तमे या पे भी करि परिबो है अच्छा हमें आरंभ करिवे डिस्कशन टा जोटा हमें चालू रखथिले ठीक अछि देखो एक्चुअली रोहित वेरी गुड रोहित रो जो जिनसरा कले से 12th क्लास रे अछि स्टिल हिज एंड विजन एक्चुअली जदी देखिबो जो माने दिल्ली माने महाराष्ट्र दिल्ली यूपी चंडीगढ़ एई सब पिला माने से माने तांगर पेरेंट्स माने पिला माने को 12th क्लास से माने ग्रूमिंग ऑफ करांती और विजन टा सेमती शार्प थाए ठीक अछि बहुत खुशी आई एम रियली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम माने आफ्टर मोर देन ए ईयर आई फाउंड सच एन गाय हु इज इन द 12th क्लास रो तार विजन वेरी नाइस हला our state is माने देश आगे बढ़ रहा है सेमते हम ओडिसा भी आगे को बढ़ुची डेफिनेटली क्वालिटी प्रोवाइड करले and सब जिंस आगे को and physics wala is commitment for that one with the enriching of its quality right very good okay so weathering हमें देखिबा कि weathering पे किए that is responsible weathering पे so देखले weathering breaks down and loosens the rock surface generally break down करे और loosen करते rock surface minerals so that they can transport it away by the process of water, wind and ice. So who are the agents of transportation है agents of transportation agents of transportation देखिए that is your water, wind and ice right water, wind and ice. श्रद्धा कोची सर मो अधा बुढ़ी हला परे स्टार्ट कर सेमती किछि नै हला इट इज नॉट लाइक दैट वन श्रद्धा इट इज नॉट लाइक दैट वन एक्चुअली देखो गोटे समय आसे एंड सबुठ बड़ जिंस हला इनफॉरमेशन ता बहुत बड़ जिंस मे बी रोहित हैज माने लिविंग इन दैट सर्कल जो थ्रिक ता न्यूज़ पाउथो हला इनफॉरमेशन ता सेमती नै इनफॉरमेशन ता केते बळे आसीओ एंड हला जो कहंतनी कि इट इज माने देर हुआ दुरुस्त हुआ है माने लेट रे स्टार्ट हला किंतु दुरुस्त माने जो कहंती कहावत अछि देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ है इट इज स्ट्रांग सो डोंट वरी फॉर दैट वन मोस्ट वेलकम रोहित मोस्ट वेलकम आई एम ऑलवेज अवेलेबल थैंक यू रोहित सो देखियो है ना वेदरिंग हमें कौन जानिबा वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स वेदरिंग इज बेसिकली द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स Oh my goodness, very good Shraddha. It happens with many one. देखो वो भी निजे इंजीनियरिंग कला पर जॉब करथले देने मते लागले देने क्विट प्रिपरेशन सो इट्स एन परमिटेशन कॉम्बिनेशन सो मोस्ट इट हैपेंस विथ मेनी Shraddha ठीक अछि बहुत जन का मैक्सिमम संगरे एटा हुए ठीक अछि जॉब संगरे क्विट करी समान करंती कारण जॉब रे गोटे सैचुरेशन पॉइंट रे पहुंचला पर लागी कि अरे यही के जॉब है लेट्स क्विट सो बहुत जन एमती करंती एंड दिस टाइम व्हेन आई टुक द इंटरव्यू आई फाउंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स तमे जानिछ मु तुमका शेयर करछि ए वर्ष जो मु फिजिक्स वाला नामे इंटरव्यू नथुलो ओसीएस में आई फाउंड 60% ऑफ द इंटरव्यू कैंडिडेट्स दे आर जॉब होल्डर्स हैला तो एटा बहुत बड़ कथा न समस्त संगर हुए एटा हैला सो मते यदि पचारिबो कि माने छोटो रु नै कि सब वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस पीपल आर कमिंग दोज आर नोविस जो माने नुवा थाते जो माने जॉब होल्डर्स हैला वैरायटी ऑफ परमिटेशन कंपनीज सो किछि न भाबी कि आगु को माडी चला हैला ठीक अछि okay so weathering hame dekhiba ki it is the breaking down of the rocks soil minerals as well as the wood and artificial material by your contacting atmosphere water and biological organisms so इतरे कोन breaking down हुए केमते breaking down हुए जानिबा को weathering take place in situ ता माने in the same place with the same हैला same place or with little or no movement in situ माने कोन हुए कि सेम प्लेस रे माने जदी एई गोटे जगह हम ओडिसा रहउची रॉक टा भांगुची ताले एटा मध्य प्रदेश रहउतो ताले एटा राजस्थान रे रहउतो ताले एटा पंजाब रे रहउतो ताले एटा नॉर्थ अमेरिका भी रहउतो साउथ अमेरिका रे रहउतो यूरोप रे रहउतो ऑस्ट्रेलिया रे रहउतो इन सितु माने इन डिफरेंट सेम प्लेस देखो ए जो जिंसो गडा तमे एनसीईआरटी रे खाली लिखि देछि ए जो जिंसोडा नॉर्मली पिला माने कोन एटा बुझी परंतनी इन सितु ओके इन सितु मींस the action has been taken place everywhere at the same time हैला सब जगह सेम टाइम रे होतो माने if a rock breaking down at the rocky mountains in North America
It's also the rock breakdowns in Himalayas in Asia, Andes in South America, Alps in Europe. सब जगह एटा हुए इन situ. क्लास कले कौन होबो ई सब जिंसोडा तुमको ना क्लास रे एक्चुअली कौन हुए सिविल सर्विस मेंटर्स जो मन था सेही जिंसोडा को डिकोड करा जाए. सिविल सर्विस एग्जाम इज एक्चुअली गोटे जदि तमे देखिबो टिके माने लॉ लैंग्वेज माने आई मीन बहुत जगह तमे करिवो ताको इंटरप्रेट करिके पढिया हुए वो सब सब्जेक्ट पढा जीएस से खास करी हला आ क्लास कले सेही जिंसोडा तमे एडवांटेज नै परिबो. अच्छा एठी हम कोन दबा कि मन रखो मुठी खाली एति कहले वेदरिंग रे किछि मोशंस होनी देयर इज नो मोशन खाली भांगी गळी पडियो. फॉर एग्जांपल्स लुक एट द डायग्राम. एठी तमे कोन देखुचो ए डायग्राम ता खाली देखो एठी गोटे पत्थरटे अछि देयर इज एन peeling off of the rock plates one rock mass is there and it just break down it just peel off जेन peel off means जैसे तमे जेमति जतरे पियाज देखुचो पियाज रे कोन देयर इज the concentric layers in the onion like that one in the rock surface it is looks just like the same thing it's just peel off like that there are so many concentric layers in your rock mass exactly केमति होची एठी कोन होबो कि पिल ऑफ मानटा मु बुझेले एठी कोन होबो आउथरे पुनी आसीबी डायग्राम तो एठी कोन होची एटा भांगी के तळे गळी पडुची सो हेंस वेदरिंग हैज नो मोशन इट इज जस्ट इन स्टैटिक से भांगी के तळे गडुची आगु जीवा पुनी आई विल कम बैक टू दिस डायग्राम अगेन डोंट वरी हला पुनी देखिबा द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग बेसिकली यस बिल्कुल प्रतीक्षा लिखले सर इन सितु एंड एक्स सितु मींस हला गोटे सेम प्लेस ऑकरिंग इन द माने गोटे जगह रे निज जगह रे एक्स सितु माने आउट ऑफ द एनवायरनमेंट हला इन सितु एक्स सितु माने जो जगह रे इट इज नॉट इन द सेम एग्जैक्ट एनवायरनमेंट एक्स सितु ता माने कोनती कि आउट ऑफ द एनवायरनमेंट हला माने एंडेमिक नुह व्हिच इज नॉट एंडेमिक. Again, the process of weathering has categorized as three major categories. Process of weathering has been categorized as three major categories. That is your physical or mechanical weathering, chemical weathering, biotic or biochemical weathering. अच्छा प्रतीक्षा कौन लिखला सर नेशनल पार्क और बॉटनिकल गार्डन भितरु इन सितु और एक्स सितु की हबो. देखो नेशनल पार्क जदि हमें देखिबा कि एक्स सितु माने जेमति मु कहबे कि निज एरिया रे देखो मु ओडिया रे पूरा शुद्ध ओडिया रे कहूची कि व्हिच इज नॉट एंडेमिक माने निज एरिया रे सेटा नो बट बाहर सेटा अणा हाइछ जेम फॉर एग्जांपल्स मु कहबी कि द इन प्रोजेक्ट चीता द चीताज आर ब्रॉट आउट फ्रॉम द नामीबिया तो सेटा सेले कोन एक्स सितु से जिंसटा हेगलो. इन सितु माने निज जागा भितर रे हला. बॉटनिकल गार्डन जदि हमें कहबा कि बॉटनिकल गार्डन नेशनल पार्क भितरे बॉटनिकल गार्डन जदि हमें देखिबा कि गछ गुडा बाहर को आनी के लगा हुए सेही जगह रे हला बाहर को आनी के माने सेही एटमॉस्फियर रे बढ़ंती तो हमें कहि पारे सेटा इन सितु. नेशनल पार्क जोटा हबो नेशनल पार्क रे हला बहुत जगह रे कोन हबो बाहर को आनी के रखा होची देखो वाइसा वर्षा वी कैन से नेशनल पार्क माने निजर एरिया रे जो पार्क रे जो जंगल देखा जानती नेशनल पार्क जें तुम कहबी कि पेंच नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क हला टाइगर्स माने सेठी हला माने इन सितु सेही जगह रे जदी बाहर गोटे टाइगर पडला पडिला सेटा को एक्स सितु कहजो सेमती सेठी बुझो भला हला घोसी के मन रखिबानी खाली बुझिबा. बॉटनिकल गार्डन ने कोन हो निज एरिया रे जेमते मु कहली जस्ट मु कहबी नीलकुंजरी इज ए फ्लावर व्हिच इज जनरली फाउंड इन योर नीलगिरी माउंटेन्स राइट जोटी कोठी नीलगिरी माउंटेन दैट इज इन सितु. जदी सेही फुलटा अलगा जगह कोठी बडाला से बढ़िला ताकू कहजो एक्स सितु हला. निजर एनवायरनमेंट रे जोटा हबो निज एरिया रे ताकू कहंती इन सितु. बाहर जोटा आसला ताकू कहजो बाहर बढ़िला बाहर जगह रे निज एई जिंसरा नै बाहर बडा कि बाहर जिंसरा को एठे कोन सेटा करहबो एक्स सितु वाइसा वर्षा. इज इट क्लियर प्रतीक्षा इज इट क्लियर रे बुझिएला. फिजिकल केमिकल बायोटिक एक्स सितु ओके सर ताले एक्स सितु मोर एक्स सितु का हमें कहि परिबा हला सेमती बुझिलो जिंसडा बुझिलो कि नै समस्ते श्रद्धा प्रतीक्षा डिड यू गेट इट ओके वेरी गुड. सो हमें जानले कोन वेदरिंग इज बेसिकली थ्री मेजर कैटेगरीज. वन इज योर फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड योर बायोटिक और बायोकेमिकल वेदरिंग. लेट अस नो वन बाय वन. प्रथम जानिबा फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग राइट. प्रथम हमें जानिबा फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग. लेट्स नो मैकेनिकल वेदरिंग लीड्स टू फिजिकल डिसइंटीग्रेशंस. मैकेनिकल वेदरिंग लीड्स टू योर फिजिकल डिसइंटीग्रेशन
fragmentation and breakdown of rock masses. कौन कौन कला हला mechanical weathering. Good evening Sankalp. Okay, very good. So physical I mean physical weathering is also known as your mechanical weathering, right? So it is the disintegration, physical disintegration, fragmentation and the breaking down of the rock mass into block boulders, cobbles, pebbles, sand and silt. ठीक अछि. So वर्तमान कोन हला भांगी की गडला जोटा कुआ जाय breaking down of, it is जानला breaking down of rock masses into block boulders, right? Block boulders माने एटा गोटे various size. ठीक अछि. Rock mass रो sizes of rock mass मोड लिखि दोछि, sizes of rock mass, sizes of rock mass कोन कोन हबो सबुटु बडो की हबो अंका भितरु boulder हला सबुटु बडो diameter हला diameter wise. ठीक अछि. diameter wise मु कहि दोछि diameter wise जेमति नंबर फर्स्ट की आसीबो नंबर 1 नंबर मान रे आसीबो boulders, then second रे cobble हला एडा सब परीक्षा बेले पचारंती, then आसीबो your pebbles हला pebbles, fourth रे that is your sand, fifth रे silt. This is your correct chronology, right? So it हमें जानले कि rock टा इतले तमे भाबो ये जो नदी रे जो बॉडी आसी, and after when the flood recedes you find that you know depositions of your sediments or पट्टू माटी ओडिया जोटा कहउछ हमें पट्टू माटी जमा होची. So पट्टू माटी आइला कोठू, how it comes with this weathering process and in the various तमे देखियो गोटे बड़ बड़ पत्थर थिबो झरना पाखरे केबे जाइछो, when you go nearby any of the springs you will find you know much larger stones, that is nothing but the boulders hela, and cobbles and pebbles have the different diameters रे तमे देखियो various sizes थाए, cobble टिके बड़ थाए, pebble थाए, एटा थला तमर chronologically ए जिंसटा. ठीक अछि. So this is all done by your mechanical weathering and that is known as your physical weathering. Then how it is possible? Who are the parameters they are mainly responsible for making such this mechanical weathering? The factors mainly responsible for the mechanical weathering ki samane, that is your temperature, frost actions, wind, moisture and water. Normally there are four variations mane ki thande. Normally there are the factors ki thila. One is your temperature hela, temperature thae, then it is your temperature variations way, frost actions, wind, moisture and water. So hame kon janle ki mane temperature means what? Temperature means your sun rays or sun insolation. So go to us, the entire universe is getting you know heat from, I mean sorry, the total solar system is getting heat from your sun. Sun is the main driven factor. So this temperature is getting from, we are getting from the sun. One by one देखियो. Then frost action, frost माने कौन होबो? Frost माने हला तमरो ice हला, frost means your ice, we can say ice, action of ice actions हला, हला ice मु कहूछ. ठीक अछि. Then wind and moisture and water देखियो बेटा. अच्छा ए डायग्राम को मासुची, ए डायग्राम तमर कोन छ, मु एक्सप्लेन कर, I will explain this diagram, right? So what happens normally during daytime, मुझे लिखि दोछि during daytime रे कोन होबो हला, there is you know daytime your rapid heating because of sun hela, because of sun rays hela, sun rays or insolation. Night कौन हम दिन बेला कौन हम, we know कि दिन बेला सूर्यंकर किरण पड़ी कि एटा बहुत जोर रे कौन हीटिंग ही जो, हीटिंग कले कौन हम any solid object, physics रे हम कौन पढ़ी छथि, what do we learn in the physics, that any solid body when it applied to your thermal I mean your temperature it expands hela. Solid ro nature कौन हला, when it temperature जतले expose, when it exposed to the temperature it expands. Same thing जेमति ठंडा हबो कौन हबो, contract हबो, right? So एटी मु कोन लिखबी, solid body रे कोन हबो, solid body जानि कोन normally हम कोन को solid body रे your expansion and contraction, right? एटी मु एठो भल एटी जागा होने मु भल के लिखि दोछ. Next
अच्छा सॉलिड बॉडी रे कौन हम सॉलिड बॉडी when exposed to simple when exposed to temperature they expands or cools है को प्रोसेस एटा कह जिवो द प्रोसेस इज कॉल्ड योर कंडक्शन मन रखो कंडक्शन इज द प्रोसेस एको कहंती है कंडक्शन प्रोसेस रे कोन हुए रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग है रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग कंडक्शन प्रोसेस रे व्हाट डू यू नो दैट कंडक्शन प्रोसेस रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग कंडक्शन प्रोसेस दिस इज द मेकानिज्म कंडक्शन इज द मेकानिज्म हैला फिजिक्स रे हम जानि चंती पढी चंती कि कंडक्शन मेकानिज्म हैला केमिस्ट्री हम पढी चंती सरफेस केमिस्ट्री रे कि कंडक्शन इज द मेकानिज्म कंडक्शन प्रोसेस रे कोन हेबे एनी सॉलिड ट्रेन लाइन ता जतले गरम होबे एक्सपैंड करी कि नै पुनी रात्रि कॉन्ट्रैक्ट कर दियो एग्जैक्टली इन द सेम मैनर इट हैपेंस विथ द सेम रॉक मास दिन बेला जतले टेंपरेचर पढिला एटा कोन हला एक्सपैंड करी गेला रात्रि बेला कॉन्ट्रैक्ट होला तमे निजे भाबो एक्सपेंशन कंट्रैक्शन एमती हैला बदर कोन हबो द वेरी कोहेसिव बॉन्डिंग of the molecular structures of the rock get weakened and eventually it कौन होबो breakdown occurs right so बार बार repeated expansion contraction leads to the breaking down of the rock masses so we can say it is daytime रे एटा हला night time रे कोन लिखिबे मु night time रे rapid cooling हला एटा लिखली rapid cooling हला rapid cooling कोन पाई due to radiations है ड्यू टू रेडिएशन हेगला जल्दी ठीक अच्छे सो रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग एटी कौन लिखबी रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग वीकेंस द एटी नॉर्मल लिखिबा कि रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग वीकेंस द भला भी बुझो है रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग वीकेंस द molecular bonds or weakens the molecular bonds of the rock mass है rock mass and that is called eventually leads to breakdown बार बार है तो ब्रेकडाउन दैट इज व्हाट हैपनिंग हियर हैला एटा को जगह रे एतिक बुझी हैला एटा को जगह रे हुए दिस हैपेंस इन एवरीवेयर मींस दैट मींस इन द एरिड एरिया बेसिकली हैला शुष्क जगह एरिड और सेमी एरिड रीजन्स रे इंडिया हो सहारा डेजर्ट हो कि थर डेजर्ट हो कि अटाकामा इन साउथ अमेरिका एंड इफ यू गो फॉर द एरिजोना दैट इज इन योर यूएस सोनोरा इन मेक्सिको and your Tanami and Great Sandy and Victoria in Australia. Everywhere it happens, this kind of happenings. Is it clear to everyone? Bujji ochre pila mane? Is it clear? Priyadarsan likhla sir, what type of weathering is caused by the mountain formation? What type of weathering is caused by the mountain formation? Mountain formation. प्रियदर्शिनी है ठीक अच्छे शुण मु बुझी पड़ी दिस वेरी एंथुजियास्टिक ऑल गाइज दैट दे आर समस्त क्वेश्चन बट आई एम रियली हैप्पी बट मन रख कि माउंटेन फॉर्मेशन पई तमर कंप्रेशनल फोर्सेस वे दैट इज योर है दैट इज फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन वे तमर यू नो दैट इज योर एंडोजेनेट माने जदि हम देखिबा कि मोशन प्लेट है कन्वर्जेंट मोशंस जोगु तमर माउंटेन फॉर्मेशन वे जे फोल्ड माउंटेन गोटे पटु दी पटु कन्वर्जेंट माने दीटा पटे तमर प्लेट आसीबो व्हेन टू प्लेट्स आर हला मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर जेमति हिमालय रे फॉर्मेशन प्लेट 1 प्लेट 2 दिस इज योर कन्वर्जेंट मोशन तो सेही समय कोन हबो ए फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मेशन हबो एटी जेमति हम कहबी गोटे पानी अछि अदर सेडिमेंट्स अछि ठीक अछि दिस इज योर फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन कंप्रेशनल फोर्सेस तक हम कहबा कंप्रेशनल फोर्सेस राइट so this is the formation of your mountain fold mountains we can say
एंडोजेनेटिक कन्वर्जेंट फोर्स देख मु आज गोटे भी जिनस कहूँ मत बहुत बढ़िया लगुच क्लास एत सुंदर सुंदर समस्त आंसर दो ऑल आर वेरी मच इनक्विजिटिव टू नो टू एक्वायर द विजडम बहुत बढ़िया तो बट आई वुड सजेस्ट क्लास रे तमे देखिबो सिलेबस वाइज सब जिनस फॉलो करछु जेते एटी मु देखेली हला क्लास रे सब जिनस तमे एगुडा पाइबो ए जो खास करके सर्व सक्षम बैच इज वेरी नाइस वेयर वी फॉलो बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव लेखा भी हबो आउ टिक ये भी हबो ऑब्जेक्टिव भी हबो राइटिंग एंड बोथ अक्रॉस प्रीलिम्स में ओइटा तुम प्रथमे प्रीलिम्स हबो देन तापर यू गो फॉर द मेंस सो दिस इज द फॉलो वेयर जो क्लास तुम सिलेबस वाइज तुम पाई परिबो सिस्टमैटिकली राइट आ इठी तुम फ्री रे गोटे जिंसटा तुम जो गोटे गाइडेंस तो पाउछो एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दिस वंस बिकॉज़ हियर गोटे लिमिटेड बाउंड्री गोटे बहुत जिंस कहया को पड़े हैला बट क्लास इज ऑलवेज एडवाइजेबल दिस इज फॉर योर बेटर एंड ओवरऑल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ठीक अच्छे प्रियदर्शनी बुझी पार्लु ओके नेक्स्ट हमें देखिबा कि नेक्स्ट विल कम टू द फर्स्ट एक्शन में कौन देखुछ एटी नॉर्मली जस्ट लुक एट द पिक्चर हियर अगेन माउंटेन फॉर्मेशन बाय द वोल्केनिज्म एरोजन प्लेट टेक्टोनिक बिल्कुल बिल्कुल देखो माउंटेन फॉर्मेशन देखो प्रतीक्षा में कहूँ माउंटेन फॉर्मेशन ना वेरियस टाइप्स ऑफ प्रतीक्षा माउंटेन फॉर्मेशन ऊपर पड़ी ओके ठीक अच्छे माउंटेन फॉर्मेशन वेराइटी टाइप रो हुए ठीक अच्छे तमरो ब्लॉक माउंटेन हुए हैला वोल्केनिक माउंटेन्स हुए रेलिक्ट माउंटेन अच्छी देयर आर सो मेनी हैला माउंटेन फॉर्मेशन कैन बी हैला माउंटेन फॉर्मेशन रो डिफरेंट प्रोसेस हैला टाइप्स ऑफ माउंटेन जदि हम कहबे माउंटेन फॉर्मेशन केमती बाय योर प्रथम कहबा कि बाय योर टेक्टोनिक हैला माउंटेन फॉर्मेशन कोन हो बाय योर टेक्टोनिक हैला प्लेट मोशन टेक्टोनिक मोशन ठीक अछि देन सेकंड रे बाय वोल्केनिज्म सेकंड रे थर्ड रे हैला एथरे कोन हो थर्ड रे बाय वेदरिंग हैला बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग देन also the block mountain हैला वेरियस टाइप ऑफ वेदरिंग रे कोन हो वेदरिंग एरोजन है कि योर एडी कहबी वेदरिंग है कि बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग रे रेलिक्ट माउंटेन तक को आजबो रेलिक्ट माउंटेन जेमती विंध्या और अरावली हैला रेलिक्ट माउंटेन हमें कहबे दिस इज योर रेलिक्ट माउंटेन सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रतीक्षा various types of mountains forms as per the geology there are various types of mountain can be formed one is your tectonic plate motion for examples mudeli that is your convergent plate boundaries where the your plates are moving towards each other right so example your Eurasian Indo-Australian plate and the Eurasian plate and the formation of the Himalayas right formation of but likhi doche example dei doche example dele तुमको और clarity हे जो हैला example मु दे दोछ हैला example एटी देली तमरो एग्जांपल हल्का लिखि दोछ एग्जांपल के रहबो हिमालय माउंटेन्स हला हिमालय माउंटेन्स वोल्केनिज्म कोन हो accumulations of normally accumulation mountain form accumulation of magma or lava mountain forms हैला then example केमती के देबो example mount हैला Vesuvius Italy mount Vesuvius ठीक अछि barren island हमर Italy पुडी mount Vesuvius is in Italy this is an volcanic mountain relic mountains formed due to mountains formed हैला mountains formation of mountain but लिखबी formation of mountain के mountains formed due to weathering and erosion mountains formed due to weathering and erosion right weathering and erosion example के what are the examples of your Aravali
in Rajasthan, Aravalli Mountains, hela Aravalli Mountains, we can say Aravalli Mountains. Block mountain ki haba, hela due to upliftment, hela upliftment, sudden force ki upliftment, hela upliftment of the mountain. Example ke Vindhyas mountain in Madhya Pradesh, hela mainly Vindhyas mountain. Is it okay now, Pratiksha? Is it okay? Mount Merapi, Mount Etna, there are so many mountains we can say. Yes, Sumit. Hela? Is it okay? These are the mountain formations we can segregate into different varieties like to tectonic plate portions, volcanism, relict mountains, block mountains. Hela? This is the complete segregations we will find in your formation mountain kemti hochi, and then this is your example. Right? Example ko jaga. Yes, convergent, divergent भी है परिवो, tectonic plate motions रे mountain सेठी भी है परिवो, है ना? Inland, if you go to the Saint Helena, Ascensions, Tristina da Chuna, there are lots of mountains in Atlantic oceans will found because of the formation of your convergent or divergent plate motions. Divergent meaning plates are moving up your away from each other or in opposite directions, right? Is it okay, Pratiksha? Did you get it? Okay. Next we'll go for the next, that is your frost action. Frost action generally basically responsible for the breaking down of rocks. Example. Basically, it's responsible for the breaking down of your rocks by freeze thaw action. Freeze thaw. Freeze thaw, contracts, expansion and contractions. Here it is also freeze thaw action, right? Freeze thaw actions more prominent in cool temperate region than the Arctic regions. Freezing, freeze mane tame kemti habo? Thaw mane kon hela? Thaw means you're melting. Man rakha. Thaw means you're melting. Right? Thaw means you're melting. Freeze, thaw. Thaw mane melt kariba. Just again look at here. Again. Freeze re, tame eti dekho, just look at the diagram here. Kemti mane bahar Arctic region re, freeze thaw actions operates in the rock crack. Khali tame bhabani ki rock crack hochi only because of your conduction process, means that means your expansion and contraction. Apart from that, rock also disintegrate by the process of frost actions, right? Frost actions, just look at here. Don't think that rock only disintegrate because of your this process of your expansion and contraction. Apart from that, rock also disintegrate by the process of freeze thaw actions. Normally jodi dekhibo mun kahi doji gappo bhaliya, higher latitudinal country re mane higher latitude mane ko country, higher latitude, if I say that in higher latitudinal country, ठीक अछि एठी मु लिखि दोछि बेटर रहबो हला एई जगह रे मु लिखुछि, sorry, this is your higher latitudinal country, higher latitudinal country कौन हुए high latitudinal country रे तमने those country को जगह रे the country which are having above 45 degree हला 50, let's say high latitude माने 50 degree ऊपर, let's say this is let's say this is your 40 degree or let's say 45, this is your 45 ru high latitude माने 45 ru let's say 70. The country, these areas, they are basically your temperate land, temperate regions, temperate region countries, right? Temperate regions. ये जगह कौन हुए? Normally frost action माने जेहेतु सूर्य किरण कम पड़े, since the solar insolation is very less, sun angle is your oblique rays, right? We can say the angle of sun rays is your oblique rays, right? Here it is get your
oblique rays. Because of the oblique rays, so normally what happens, your freeze happen, I mean your the process of your freezing is very rapid in the night time. Just look at here. बरफ जमिला पानी थिला पानी हेले कोन हो राती बेले दिन बेले because of your night temperature हैला तमरो बरफ माने I mean your ice forms better एटा हम लिखुची water turns to simple water turns to ice due to rapid fall in night temperature हैला राति रे बहुत जल्दी नाइट टेम्परेचर हो जाए सो राति रे कोन हो संगे संग कोन हो आइस दिस वाटर टर्न्स टू आइस हैला पुणी जेमती पुणी सकाळ हबो I mean when it approaches in the daytime, suppose let's say in the daytime again your because of your sun rays again what happens, this ice melts हैला so it कोन हबो night time रे again it mu लिखली again in the daytime again in daytime ice melts to water ice melts to water daytime. This is very simple because of your insolation sun rays. So repeatedly तब हबो दिन बेला राति बेला ice formation हला राति बेला ice formation हला दिन बेला again melt हला water हला. So what happens, regular basis रे जदी हबो melt हबो पुणी freeze हबो melt freeze एडिम कोन लिखले ice due to rapid falling turns to ice तमन कोन हबो freezing ठीक अछि. सो कोन हबो हमें जानले फ्रीज हला पुणी मेल्ट हला फ्रीज हला मेल्ट हला. सो एमती हेबा द्वारा कोन हबो टॉप ऑफ फ्रीज. सो ए जो रॉक वॉल ऊपर दिस आर द रॉक वॉल्स हला मन रखो दिस आर द रॉक वॉल्स राइट दिस आर द रॉक वॉल हला दिस आर द रॉक वॉल. सो बिकॉज ऑफ दिस राइट योर रिपीटेड फ्रीजिंग माने एंड थॉइंग थॉइंग माने मेल्टिंग repeated when it occurs your freezing and thawing. So what happens, so normally this exerts and pressure ए rock wall ऊपर गोटे pressure पड़ियो pressure पला माने कोन हो rock wall टा weak हेजो weak ହେଲା माने भांगी के गଳି पड़ियो. That is how it forms in the higher latitudinal countries, how the mountain breaks into the pieces, right? A process that is called your freeze thaw actions by the frost or the frost actions. बुझी हैला समस्त को मते को डायग्राम रे छोटे कहि दिले गप्प बढिया. Is it clear to everyone? High latitudinal country, if I take the examples of let's say the Norway, let's say the Finland, Sweden, or let's say in Germany or Italy, सब जगह रे ए भया जगह रे सेम जिंसो, or let's say in Canada and US. Very good. Next, physical weathering चला. Next come to the chemical weathering. Chemical weathering रे कौन रहिबो? Chemical weathering is the process. Some rocks देखो chemical कौन तुमको लागु थो by names itself it shows that one जेमती गोटे chemical इट किछि गोटे mix up होछि right chemical process रे जानिबा कोन. Some rocks decompose when they come in contact with the water. किछि rock कोन कोन decompose कोन माने सढ़ी जाते. Decompose means सढ़ी जिबा when it comes in contact with your water, oxygen and the carbon dioxide. Water, oxygen and the कार्बन. यस संकल्प केले सर एसिड रेन बिल्कुल एसिड रेन भी हमें कहि परिबा बिल्कुल ठीक अछि. When they come in contact with your water, oxygen and your carbon dioxide we can say. So even some minerals in rocks किछि मिनरल भी rocks रे थांती undergo chemical changes. Even some minerals in the rock they undergo some chemical changes, let's say some chemical changes when they come in contact with water and air. When they come in contact with your water and air, right? Water or air sangre samane when they come in contact with. When this happens, results removal of minerals. Jodi jetebale huye eta samane kon karanti, it happens the removal of minerals, right? Removal of minerals from your rocks. Thus the size of rock getting reduced and the rock get weakened. Hela, for example, if I say the
लाइमस्टोन रॉक नॉर्मली के मते कहि परियो फॉर एग्जांपल मु कहली लाइमस्टोन रॉक रे कोन वे लाइमस्टोन रॉक रे नॉर्मली राइट लाइमस्टोन रॉक ठीक अछि लाइमस्टोन रॉक रे limestone rock is nothing but your calcium carbonate रे कोन हबो जतले वाटर H2O संगे रिएक्ट करे ठीक अछि सो इथरु कोन हबो कार्बोनेट आयन हे जबो एटी गोटे O3 माइनस गोटे आसीबो ठीक अछि कैल्शियम कार्बोनेट माइनस जो द यस कार्बोनेशन हमें कहि परे सुमित हला कार्बोनेशन नो कार्बोनेशंस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर कार्बोनेशंस राइट कार्बोनेशन प्रोसेस में सो केमिकल वेदरिंग सेम थी वाटर एयर असले सेम थी फॉर एग्जांपल हमें कहि परिबा कि एठी गोटे देखुछ जस्ट लुक एट द डायग्राम हियर अच्छा ता पूर्वरु एठी गोटे डायग्राम ता देखो आउरी दीटा डायग्राम आनछि एठी देखो अच्छा एटा आगे देखो तापर मु सेटा को आसु दीटा डायग्राम देखुछ ए डायग्राम तमे कोन देखुछ केमिकल वेदरिंग वीकेंस द जॉइंट्स ऑफ द रॉक रो जॉइंट गुडा को रॉक रो जॉइंट केमते वीकेन कोछ जस्ट लुक एट this is a rock mass or a rock mass रे तमे कोन देखछो what you observe here ए rock mass रे तमे देखो these are the weekends right weekends these are your weekends we can say these rock mass are getting weak तमे कोन देखुछो there are some crack develops these are the cracks we can say these are the cracks right these are the cracks ना so हम कोन लिखबा crack develops हला we can say the crack develops हला तमे देखुछो एटी crack develops होइछि सो crack develop ले कोन हबो सुमि देखला कोन OI हे गेला O जगह रे अच्छा अच्छा को जगह रे अच्छा ओके नो इश्यू अच्छा कार्बोनेशन नो प्रॉब्लम इट्स ओके सुमित हे जे हला क्रैक डेवलप्स दिस आर द क्रैक डेवलप्स हाइड क्रैक डेवलप सो क्रैक डेवलप ले कोन हबो सो हाउ इट पॉसिबल अगेन दैट मींस सम मिनरल आर डिसॉल्व हला आ माने इट इज ड्यू टू because or due to crack develops कोन by due to we can say due to your dissolve of minerals due to dissolve of minerals हमें कहि परिबा हला crack develops because due to your dissolve of the minerals हला सो ए जो कोन हो तापर जेमते मिनरल डिसॉल्व होला संगे संग कोन हो ए जगह रे तुमरो क्रैक डेवलप्स हो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट योर केमिकल वेदरिंग हाउ इट टर्न्स अच्छा तापर देखो सो रिजल्ट कोन हो इट रिजल्ट्स रिमूवल ऑफ मिनरल्स हला रिमूवल ऑफ मिनरल गुडा रिमूव हो जाए फ्रॉम रॉक्स thus the size of the rocks getting reduced and the rocks get weakened सेमती कोन हो सेमती the size of the rocks get your reduce हो जाए and rocks get weak पड़ी जाए सेमती ए जो डायग्राम ता देखुछो दिस इज एन आयरन चेन जस्ट लुक एट हियर यस प्रतीक्षा कहला कि सर वीक हे जबो रॉक बिल्कुल रॉक वॉल ता धीरे धीरे वीक हे जबो अच्छा एटी तमे कोन देखुछो वन आयरन चेन यू आर सीइंग हियर iron chain is there and can the iron chain dekha hochi how it looks eguda su kon what is this kon eguda su we can say what are these yes Sumit Sankalp we can say what is this we can say kon eguda su ki koi paribo
junk. Erosion, oh my goodness, sankalpna re babu, this is called your corrosion, right? This is eguda kuaje, this is your corrosion, hala corrosion, ठीक अछि corrosion माने कलंकी खाइ जिबा, junk corrosion माने ओडी रे जोटा हमको अरे कलंकी खाइ जाइछि, हला माने corrosion process. How it happens again? This is the process of your oxidations, हला oxidation process देखिबा. This happens when oxygen combines with mineral. Generally कौन हुए? Oxygen combines with your mineral. केमती? For example, oxidation is active in rocks that contains mainly. कौन हम example देले? Yes, very good Pratik sir. है ना? संकल्प भी बढ़िया आंसर देला. It is your junk or corrosion. तो normally कौन हुए? गोटे rock रे तमरो iron थाए. Iron माने हैला कौन? Iron रो chemical formula कौन आमी कहि परिबा periodic table अनुसार that is Fe, iron, that is called your ferrous contained iron. When oxygen combines it forms iron oxide, right? When oxygen combines it forms your iron oxides. Rather आमी कौन कहि परिबा it is your हैला जेमती your ferric oxide, ठीक अछि ferric oxide, rather we can say ferric oxide, that is your Fe2O3, right? Fe2O3 कौन हुए मैं तुमको कहि दूं actually exactly कौन हुए. When iron combines with your water it forms, it reacts करी कौन हबो your ferric oxide करे हैला. ferric oxide पुनी गोटे oxygen minus हे गेले reacts करके that is your कौन हबो corrosion टा आरंभ हो. That is what happens here in a very raw language, ठीक अछि. So iron, when oxygen combines it forms your iron oxides, we can say. So gradually what happens, it weakens. So धीरे धीरे corrosion हे जो कौन हबो, it get weakens and the iron metal and the latter break down completely. धीरे धीरे weaken हे जो and latter it break down completely break down हे जो, ठीक अछि. It weakens and latter break down it completely. Exactly this happens. तमे देखथिबो बेले बेले ए भलिया जो हुए इत्ते तुम भाबो इत्ते मोटा सिकुली लोहा सिकुली माने जोडा हाथ मारले हाथ भी तमरो माने हाडो भांगी जिवो, किंतु भाबो ए जो पानी रिएक्शंस करिकि व्हाट हैपेंस, इट कंप्लीटली ब्रेक डाउन्स हैला. माने इवन इफ जदरा जंक खाइ जिवो तमे दी फाळ दबो इ छिंडी के बाहर जिवो. दैट इज व्हाट द पावर ऑफ योर corrosion और junk. बुझी हैला? Yes Pratik, stainless steel use करा जाए भी सेति पई. बिल्कुल बिल्कुल stainless steel is basically corrosion resistance. stainless steel रे सेति पई तमरो molybdenum हैला बहुत सारा यूज हुए and chromium से जो दिया हुए chromium, there is an addition of your chromium हैला. chromium strength पई chromium दिया हुए हैला. manganese for the hardness and your tungsten and molybdenum for your corrosive resistance, tin for your corrosive resistance हैला. ठीक अछि. आयरन हमें देखले सेटा हमें जानि परले कि केमिकल रिएक्शंस केते खतरनाक तमे भाबो. जदि तमे भाबो लुहा सिकुली रो आयरन लुहा सिकुली ए अवस्था ताले बड़ बड़ पहाड़ रे केते बड़ प्रॉब्लम होत माने आई मीन हाउ इट वर्क्स, हाउ इट इज रैपिड इन द केमिकल वेदरिंग. ओके वेरी गुड. नेक्स्ट देखियो कोन हमें बायोटिक वेदरिंग. सो हमें कोन सारले आज हमें ठीके समरी जदि हम पढिले कोन हैला. So we have completed physical weathering, chemical weathering. Now come to the biotic weathering. Let's say biotic weathering कौन देखिबा. Biotic weathering normally usually जदि हम देखिबा. Okay, biotic weathering कि usually the roots of the plant बड़े बड़े कौन हुए plant रो roots माने भी से माने भी बहुत बड़ बड़ रोल प्ले करता. Normally usually the roots of the plant, especially trees, can force apart the joints. बड़े बड़े कौन हुए tree कौन करे force apart the joint को force apart कर दे joints and cracks in the rocks है ना, joints and cracks in the rocks. At the same the roots of some plants बड़े बड़े कौन हुए roots of some plants produce chemicals which causes weathering of the rocks. बड़े बड़े ठीक है chemical produce करे which produce your chemicals basically है ना.
बायोटिक वेदरिंग में कौन हुए बेले बेले कौन हुए तुम देखी गोटे कॉलेज बिल्डिंग रे की देखी सुमित देखीचु प्रतीक्षा श्रद्धा देखी गोटे कॉलेज बिल्डिंग विराट बड़ बड़ ओस्त गछ होता देखियो तुम 10 वर्ष पर गला से बिल्डिंग टा से काटिकी गली पड़ो रेवेन्सा कॉलेज देखियो बहुत जगह उठी धीरे धीरे से बिल्डिंग टा एबे मैं देखु से बिल्डिंग टा अबैंडन कराई आई थिंक केमिस्ट्री और बॉटनी डिपार्टमेंट पछरे हला केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से पाखरे मैं देखी हला काहेकि बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस रूट्स आर मेनली रेस्पोंसिबल एक्चुअली सिंध रूट्स रे थाए कोन अरे गछटा तो बढ़ुची पुनी हुए केमती व्हाट इज हु कैन से रूट रे एमती कोन ता थाए हला सो एट द सेम द रूट्स ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस केमिकल्स रूट्स माने केमिकल प्रोड्यूस करन किए मते कहि परिबो श्रद्धा प्रतीक्षा की कहि परिबो रूट्स ता पुनी केमिकल प्रोवाइड करछि हाउ इट इज पॉसिबल हु कैन से हाउ मुइट लिखली आम ये कौन डिस्कस कले रूट्स प्रोड्यूस केमिकल्स है रूट्स प्रोड्यूस केमिकल्स है केमिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट लिखली बिकॉज ऑफ दैट रॉक है रॉक ठीक अच्छे और रॉक crack develops in the rock है crack ठीक है develops in rock केमती हुए how it is possible what is that called what is that chemical called ठीक अच्छे से गोटे chemical तुम प्रोड्यूस हुए ठीक अच्छे and से chemicals रे that is your crack develops right that cracks develops so along with other types of weathering जदि हम देखिबा ठीक अछि जदि हम देखिबा along with weathering along with other types of weathering biological weathering can contribute to the further degradation of the rock mass so एमती हम देखिबा कि बायोटिक weathering जो भी केमिकल प्रोड्यूस हुए ठीक अछि से केमिकल नॉर्मली हैला तमरो रॉक जॉइंट मास भी हुए रॉक रो बड़ बड़ रॉक जिते बड़ इवन इफ देखा कि ग्रेनाइटिक रॉक भी ग्रेनाइटिक भड़े एते बड़ आमे जेंते आगु पढितले कि इग्नियस रॉक्स केते पावरफुल सेटा भी तमरो ब्रेक करि जाय धीरे धीरे हैला बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स एंड दैट केमिकल इज नथिंग बट दैट इज योर ह्यूमिक एसिड हैला से केमिकल इज नथिंग बट योर ह्यूमिक एसिड एंड दिस ह्यूमिक एसिड इज रेस्पोंसिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ठीक अछि एबे क्वेश्चन करबा टिके ठीक अच्छे अल्प किसी क्वेश्चन कर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड द रूट एक्सुडेशंस यस प्रतीक्षा ठीक अच्छे क्वेश्चन टिके कर दबा हैला किछरा क्वेश्चन कर दबा आज पर हम जेमते रेगुलर करंती हैला करिकि ओके विल वाइंड अप दिस वन कर एटा क्वेश्चन करो ड्यू टू एक्सफोलिएशन ऑफ द रॉक्स लेयर्स ऑफ रॉक्स मटेरियल हैला due to exfoliation of the rocks the layers of the rock material spill off leaving behind a rock called boulder आटी पूर्व एते बड़ डायग्राम करिके हम देखुतले कोन कोआ जाय this type of weathering is known as chemical weathering biological weathering spheroidal weathering and salt weathering की कहि परियो ट्राई करा कोन हे परियो what would be the answer कौन है परियो due to exfoliation of the rocks mass material peel off leaving behind a rock called boulder this type of weathering is known as sorry answer जदि हमें देखिबा it is known as your spheroidal weathering right it is known as your spheroidal weathering answer is your C अच्छा ठीक अछि नो प्रॉब्लम देन केमिकल वेदरिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन को जगह रे वेरी गुड संकल्प केमिकल वेदरिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन एरिड रीजन सेमी एरिड रीजन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन मेडिटेरियन रीजन को जगह रे केमिकल वेदरिंग मोस्ट प्रोमिनेंट हुए हमें निजे भाबो
एते सारा आम डिस्कसन कले मु कहली ऑक्सीजन कलंकी लगी जाउची पुनी सेठी रॉक मास देखिल को जगह तुम भाबुछ एरिड रे हे परिबो एरिड माने शुष्क सेमिड माने सेमी शुष्क ह्यूमिड ट्रॉपिकल आ गोटे हला तमरो मेडिटेरियन रीजन कोटा हे परिबो वेरी गुड इट इज योर ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन हम आंसर जदि हम देखिबा इट इज योर सी ह्यूमिड ट्रॉपिकल कोन हुए मॉइस्चर बहुत अवेलेबल थाए पानी मॉइस्चर और टेम्परेचर दीटा बहुत था एंड दैट इज व्हाट केमिकल वेदरिंग टा बेसी तमरो एक्टिव हो जाए लास्ट दीटा क्वेश्चन देख कर दबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल वेदरिंग प्रोसेस किया भीतर हाइड्रोलिसिस सॉल्ट बेसिंग एक्शन ऑफ एसिड ऑक्सीडेशन ठीक अछि कोन हे परिबो एटा not chemical weathering we can say this is a not chemical weathering process hela eta mu kahi dochi this is your salt basing hela very good sankalp set bar dela salt basing ta normally kon huए salt basing tomar coastal area re ठीक अछि salt basing द्वारा mechanical actions of your web that is not in chemical weathering no set ठीक अछि chemical weathering no last question a weathering process in which layers of rock peel off हुए as expansion alternates with contraction is known as कौन हे परिबो की कहबो क्वेश्चन ना पढ़ो a weathering process in which layers of rock peel off हो जाए माने छाड़ी हो जाए layers of rock peel off expansion alternates with contraction कौन हुए shattering block separation granular disintegration exfoliation okay very good एटी तले that is process of your exfoliation process हम कहबा this is your D for Delhi exfoliation process ठीक अछि ए प्रोसेस को एक्सफोलिएशन करा जाए एटा सब मन रखो सब एनसीईआरटी क्वेश्चन the most of the things we are doing here that is related to your एनसीईआरटी ठीक अछि ताले ओके आज पई ताले एतिक रखिबा वेरी गुड प्रतीक्षा इट इज योर एक्सफोलिएशन प्रोसेस मन रखो आज एते भी तमे जहां भी किछि करलो इट इज ऑल योर एनसीईआरटी हैला एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ला माने बहुत जिंस तमे जानि पारियो ठीक अछि एनी क्वेश्चंस फॉर द ओके ताले माजी एतिक वाइंड अप करछि पुनी काली देखा हबो विथ अ न्यू टॉपिक काली पुनी हम गोटे नुवा टॉपिक रे पढिबा ठीक अछि ओके देन हला काली हमें पढ़िबा तमरो योर लैंड फॉर्म सुप्रीम काली में स्टार्ट करिबी हला okay then thank you all of you thank you so much thank you for all your patience thank you for staying with me thank you so much thank you everyone good night all हला काली पुनी देखा हबो हला till then take care bye bye thank you all of you thank you so much thank you sankalp good night thank you pratikya thank you all of you take care thank you so much thank you